जस्ट कंफर्म वेदर वी आर लाइव. कंफर्म कीजिए क्या हम लाइव आ चुके हैं. जस्ट वेटिंग फॉर अस टू बी लाइव. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून माय डियर सीएस स्टूडेंट फ्रेंड्स. कैसे हो आप सब लोग? हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई सीए प्रतीक ने वेलकम यू टू द MEPL channel. Before going ahead, I am quite sure you must have subscribed to the MEPL channel and hit the bell icon. Yes, this is MEPL CS exclusive channel. Very good afternoon to one and all. I hope you must be doing well. तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट, the elective subject in CS professional, that is subject number 7.2. Yes, GST and corporate tax planning. GST एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग. हमने GST का डिस्कशन एकदम डेप्थ में स्टार्ट किया है. हमने स्टार्ट किया था विथ, यस, वी हैड स्टार्टेड विथ स्क्रैच. स्क्रैच मतलब GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. इतने स्क्रैच से स्टार्ट किया था. हमने देखा कि ये जो GST का लेवाई है ये अप्लाई होता है ऑन टैक्सेबल इवेंट विच इज सप्लाई. सप्लाई ऑफ व्हाट? supply of goods, supply of goods and services or both. Yes, इस पे GST चार्ज होता है. Yes, so मेघना, taxable event to be remembered, my dear friends from across India, taxable event to be remembered is supply. Supply कवर किया गया है कौन से सेक्शन में? The supply कवर किया गया है सेक्शन 7 of CGST Act. ओके आज मैं आपको एक रैपिड रिवीजन करवाने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू डू रैपिड रिवीजन विथ यू बिफोर वी गो अहेड विथ टुडेस फर्दर डिस्कशन. चलेगा ना? यस सर, ऑफ कोर्स चलेगा, दौड़ेगा, मजा आएगा. यस, तो इस रैपिड रिवीजन में यस सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट. तो बॉडी ऑफ GST लॉ, बॉडी ऑफ GST लॉ जो है ना, दैट हैज 5 एनैक्टमेंट्स. कौन से 5 एनैक्टमेंट्स? CGST Act, SGST Act, IGST Act, UTGST Act and GST Compensation to State Act. These are the 5 acts which are covering GST. Apart from that, notifications, circulars. Yes, notifications issued by central government, circulars issued by CBIC, then guys decided cases, and of course not to forget rules. Ashish ji, very good afternoon Ashish. Yes, not to forget rules. तो जब भी एक्ट में ऐसा वर्ड यूज होता है एज प्रिस्क्राइब्ड, एक्ट में जब भी वर्ड यूज होता है एज प्रिस्क्राइब्ड, देन वी आर टॉकिंग अबाउट रूल्स. एक्ट में जब भी वर्ड यूज होता है एज नोटिफाइड, देन वी आर टॉकिंग अबाउट नोटिफिकेशंस. ओके, एंड सर्कुलर्स क्यों चाहिए सर? जब भी कोई भी इश्यू एम्बिगुअस होता है, एम्बिगुअस मतलब कंफ्यूजिंग होता है, तो चाहिए सर्कुलर्स. यस सर, ये सब कुछ समझ में आया? आगे बढ़ो. यस, तो सेक्शन 9 हमने स्टार्ट किया था लेवाई एंड कलेक्शन. लेवाई एंड कलेक्शन में 3 टाइप के चार्ज देखे हैं, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज. यस, एंड कौन बताएगा व्हाट इज द थर्ड चार्ज विच वी हैव सीन? तो थर्ड चार्ज मतलब द liability of e-commerce operator to pay GST. याद है ना दोस्तों? फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज एंड लायबिलिटी ऑफ ई-कॉमर्स ऑपरेटर टू पे GST. यस सर. तो फॉरवर्ड चार्ज में इट इज लायबिलिटी ऑफ सप्लायर टू पे GST. रिवर्स चार्ज में इट इज लायबिलिटी ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई टू पे GST. एंड in 9 subsection 5 means in section 9 subsection 5 they are saying it is liability of e-commerce operator to pay GST. Yes sir. इंट्रास्टेट सप्लाई पे आएगा CGST प्लस SGST, इंटरस्टेट सप्लाई पे आएगा IGST. GST in India follows dual model. Dual model मतलब half of the GST goes to central government and balance half goes to state government. क्या सबको सब कुछ क्लियर है यहाँ तक? Is everything clear to all of you till this point? Can we go ahead? Yes sir. जब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 15,
यस, सेक्शन 15 पे क्यों गए हम सर? सेक्शन 15 पे इसलिए गए क्योंकि सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 was saying that the value of the goods will be as determined in section 15. Value of the goods, value of the services. I would say value of the supply. So value of the supply will be as determined as per section 15 of CGST Act. तो हमने सोचा कि हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है with respect to charge and with respect to taxable event, with respect to body of GST law, with respect to all these basics. तो अब हमने सोचा let's go to some numbers. So that's why we have gone to section 15. Section 15 में दोस्तों कितने subsections है? How many subsections are there in section 15? सेक्शन 15 में 5 सबसेक्शंस. कितने सबसेक्शंस है? 5 सबसेक्शंस है. सबसेक्शन 1, assessable value is equal to transaction value. Assessable value is equal to transaction value. That is price actually paid or payable for supply of goods or services or both. Yes. याद है ना दोस्तों? मेरी जीत तभी होगी जब ओपन बुक या इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपको बिना बुक खोले सब आंसर्स आ जाएंगे. दैट विल बी माय विक्ट्री. दैट विल बी आवर विक्ट्री. ओके, बिकॉज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज कंसिस्टेंसी. आप अगर कंसिस्टेंटली लेक्चर्स देखोगे तो आई एम क्वाइट श्योर you will also follow this GST the way I want you to follow. Yes. So guys and girls, my dear friends, subsection 1, assessable value is equal to transaction value, that is price actually paid or payable for supply of goods or services or both. Yes. Subsection 2, inclusions. इस transaction value में क्या क्या होना चाहिए include? तो उसमें इंक्लूड होना चाहिए ए बी सी डी ई. व्हाट इज दिस ए बी सी डी ई? सर ए मतलब क्या? ए मतलब टैक्सेस अदर देन जीएसटी. बी मतलब एनी एक्सपेंसेस incurred by recipient of supply on behalf of supplier. C, incidental expenses. D, interest, late fees, penalties. yes sir. and कल हर एक पॉइंट हमने एग्जाम्पल के साथ देखा है. yesterday we have seen each and every point with example. yes sir. and E point means subsidies which are linked to the price of the goods but other than central government and state government subsidy, isn't it? तो ये हो गए आपके 5 important क्या inclusions. ओके, अब दोस्तों क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? कैन आई गो अहेड and discuss with you exclusions? Can I go ahead and discuss with you exclusions? क्या exclude होना चाहिए while calculating assessable value? What should be excluded while computing assessable value? yes sir. आगे बढ़ो. चलो देखो, logically section 15 subsection 3 is talking about exclusions. It is talking about exclusions. okay, इसमें specifically एक exclusion बोला गया है, that is of discount. which exclusion they are talking about? Discount. is it clear? They are talking about exclusion of discount. okay, so section 15 subsection 3 says that transaction value should exclude discount. Transaction value should exclude discount. Which discount? Discount which is given before or at the time of supply. Before or at the time of supply. okay, and discount which is given after supply, and discount which is given after supply.
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैन यू टेल मी एग्जाम्पल, क्या आप मुझे एग्जाम्पल बता सकते हो ऑफ डिस्काउंट विच इज गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई? Can you please tell me example of such a discount which is given before or at the time of supply? इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रेड डिस्काउंट. इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रेड डिस्काउंट. ओके गाइस, एंड कैन यू गिव मी एग्जाम्पल ऑफ डिस्काउंट विच इज गिवन आफ्टर सप्लाई? तो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है कैश डिस्काउंट. क्या है एग्जाम्पल? कैश डिस्काउंट. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डिस्काउंट. तो डिस्काउंट शुड बी एक्सक्लूडेड while computing assessable value. ओके, आपको एक एग्जाम्पल देता हूं. ओके, बट एग्जाम्पल देने से पहले आपको एक बोलना चाहूंगा कि ट्रेड डिस्काउंट आपको सपोज माइनस करना है, एक्सक्लूड करना है, तो कंडीशंस क्या सेटिस्फाई होने चाहिए? एक ही एक्चुअली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दैट इट शुड बी रिकॉर्डेड, दैट ट्रेड डिस्काउंट should be recorded in the tax invoice. It should be recorded in tax invoice. Is it guys clear to all of you? Yes sir. And cash discount जैसा discount है, मतलब कोई भी discount है which is after supply, तो क्या conditions satisfy होने चाहिए? So what conditions should be satisfied? Very simple conditions should be satisfied. Simple and obvious. क्या conditions है? Number one, it should be as per terms. It should be as per terms of supply. It should be as per terms of supply. मतलब this discount should be guys as per terms of supply. Okay, means this should not be haphazard discount. Okay, this discount should be as per terms of supply. Secondly guys, it should be relatable. It should be relatable to tax invoice. कौन से एग्जैक्टली इनवॉइस के अगेंस्ट डिस्काउंट दिया है ये पता होना चाहिए. So it should be relatable to tax invoice. And last condition is that, last condition in my opinion, the most important condition, and that is input tax credit attributable to such discount, attributable to such discount attributable to such discount should be reversed. Okay, input tax credit attributable to such discount should be reversed, of course, by recipient of supply. By recipient of supply based on document issued by supplier. तो ये सब क्या चालू है, हमें एग्जाम्पल के साथ बताओ. तो यस, एग्जाम्पल से बताता हूं. तो कैन आई गिव यू अ एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल फॉर दिस? कैन आई गिव एग्जॉस्टिव? एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल देता हूं आपको इसके लिए. चलो देखो एग्जाम्पल, सीधे एग्जाम्पल. ऑल ऑफ यू, सीधे एग्जाम्पल. ऐसा देखो एग्जाम्पल. गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड रुपीज 1 lakh, but less
50% trade discount. But 50% trade discount, which is equal to rupees 50,000 plus GST. So guys, at this point, can you tell me what is the assessable value? So therefore, do you agree with me that assessable value is rupees 50,000? Why? Why? Because section 15 subsection 3 clause A, ये clause A है कि आपको ऐसा डिस्काउंट माइनस करना होता है, ये आपका clause A है. Yes. So section 15 subsection 3 clause A states that discount before supply shall be excluded. Did you understand? That's why assessable value is rupees 50,000. Do you all agree with me? Yes or no? Yes sir. आगे बढ़ो. इस स्टोरी में आगे क्या हुआ? इस स्टोरी में आगे ऐसे हुआ कि सप्लायर further gave cash discount of rupees 2,000. Supplier further gave cash discount of rupees 2,000. Okay guys, now whether assessable value will be equal to rupees 48,000, whether assessable value will be equal to rupees 48,000. If yes, you will have to satisfy how many conditions? For assessable value to be equal to rupees 48,000, you will have to satisfy how many conditions? Friends, we will have to satisfy 3 conditions. Do you agree? Do you agree कि पहले assessable value 50,000 थी? Do you agree? पहले assessable value 50,000 थी. And now कैश डिस्काउंट दिया गया है 2,000 रुपए का. अब assessable value 48,000 हो सकती है. But what are the conditions to be satisfied? Yes guys. See, first of all, this discount should be as per terms which existed at the time of supply. This discount should be as per terms existing at time of supply. Yes, ये होना चाहिए. अभी हमें पता है that it is related to particular invoice. हमें प्रूफ कर सकते हैं कि ये 2,000 का डिस्काउंट इस इनवॉइस के अगेंस्ट है. तो दैट कंडीशन आई थिंक इज सेटिस्फाइड. क्या सेटिस्फाई हो गया है? ये भी हम एज्यूम कर रहे हैं सेटिस्फाई. सेकंड ऑल्सो वी आर सेइंग सेटिस्फाइड बिकॉज डिस्काउंट इज रिलेटेबल टू अ पर्टिकुलर टैक्स इनवॉइस. तो उसका टेंशन नहीं है. अब बचता क्या है दोस्तों? बचती एक ही चीज है, दैट इज द अकाउंटिंग एंट्री. यस, अब देखो मजा देखो. सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन देखो दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन. डू यू एग्री? यहाँ पे 2 पार्टीज इन्वॉल्व्ड है, सप्लायर, रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई. से सप्लायर का नाम ए है, रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई का नाम बी है. Assume that name of supplier is A, name of recipient of supply is B. Okay. ये जो recipient of supply है ना, उसके books of account में क्या entry pass हो गई? What entries passed in his books of accounts? When he purchases the goods, entry in his books is purchases account debit. Do you agree?
परचेसेस अकाउंट डेबिट कितने से सर? ओरिजिनली 50,000, यस सर 50,000। आईटीसी अकाउंट डेबिट कितने से? आईटीसी अकाउंट डेबिट से जीएसटी इज एट 18%. In this whole case, say GST is at 18%. So guys, this will be 9,000. Yes, sir. It will be 9,000. To supplier, 59,000. क्या सब मानते हो? ओरिजिनली ये हुआ, यस सर, ओरिजिनली ये हुआ. हाउ and why it was possible for this person to take ITC of 9,000? It was possible for B to take ITC of 9,000 because A, what did A do? What did A do? A have passed entry as follows. Recipient of supply account debit to sales to output tax. Are you getting it? Recipient of supply account debit to sales to output tax. Yes, sir. Recipient of supply account debit 59,000, sales 50,000, output tax 9,000. क्योंकि इसने आउटपुट टैक्स पे किया, बिकॉज ए हैज पेड output tax of 9,000, it is possible for B to take ITC of 9,000. ये मानते हो सब लोग? Do you all agree with this fact? Yes sir. अब दोस्तों, जब डिस्काउंट दिया, अब दोस्तों जब डिस्काउंट इन्वॉल्व हुआ, ओके, डिस्काउंट दिया नहीं बोलूंगा क्योंकि ए ने डिस्काउंट दिया है, बी को इस डिस्काउंट मिला है. ओके, तो जब ए ने डिस्काउंट दिया तो अकाउंटिंग एंट्री क्या पास हुई? कितने का डिस्काउंट इन्वॉल्वड है? डिस्काउंट इन्वॉल्वड इज ऑफ 2,000 रुपीज. यस सर. तो ए के लिए वो बन गया एक्सपेंस. तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2,000, isn't it? Discount account debit 2,000. Yes sir. Then आउटपुट टैक्स डेबिट. तो आउटपुट टैक्स को डेबिट कैसे हुआ? बिकॉज दिस द जीएसटी पेएबल हैज गॉन डाउन बाय 18% ऑफ 2,000, which is rupees 360. To recipient of supply account 2,360. Do you all agree with this? Yes sir. अब दोस्तों, रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई जो है वो क्या एंट्री पास करेगा? उसके बुक्स में क्या इफेक्ट होगा? उसके लिए डिस्काउंट इज रिसीव्ड, तो उसके लिए ये है इनकम. यस, डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम फॉर हिम. So what entry he will pass is supplier account debit कितना? 2,360. Supplier account debit 2,360 to discount 2,000 and guys and girls to ITC 360. So my whole question to you is ITC के साथ क्या हुआ? ITC हो गया क्रेडिट. यस, जो ITC हमने लिया था 9,000, उसमें से 360 हो गया रिवर्स. डू यू एग्री विथ मी? डू यू एग्री विथ मी? यस सर. तो इन शॉर्ट, अगर वैल्यू 2,000 से कम करनी है, मेघना, if we want to reduce the value by 2,000, it is compulsory that recipient of supply should reverse ITC by 360 rupees. इसलिए देखो थर्ड कंडीशन क्या है?
कंडीशन नंबर 3 क्या है, इसलिए कंडीशन नंबर 3 ये है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट एज attributable to discount, that is this rupees 360, to discount shall be reversed by whom? By recipient of supply. क्या ये पॉइंट समझ में आया सबको? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? हमने बहुत ही अच्छे तरीके से with help of accounting entries we have seen this point. Yes or no? इसलिए ना ये बंदा कौन सा बंदा? सप्लायर, रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई को क्या देता है, कौन सा डॉक्यूमेंट देता है? ये करने के लिए क्रेडिट नोट देता है. क्यों क्रेडिट नोट? क्योंकि ए के बुक्स में, मतलब सप्लायर के बुक्स में, रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई का अकाउंट क्रेडिट हो गया ना, इसलिए क्रेडिट नोट देता है. So on basis of that credit note, B should reduce the ITC. जो पहले ITC का डेबिट बैलेंस था 9,000 रुपए, वो 360 रुपए क्रेडिट करना है. Yes or no? Because ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट था. आई एम आस्किंग यू दैट डिड यू अंडरस्टैंड इट? आई विल बी हैप्पी टू नो कि आपको समझ में आया है कि नहीं. Yes. Yes, guys, just reply. I'm having a sip of water. तब तक आप शांति से लिख लो. समझ में आया कि नहीं मुझे बोलो चैट विंडो में. So guys and girls, this completes the section 50. इन शॉर्ट आपको 5 चीजें करनी है. डिस्काउंट आपको एक्सक्लूड करना है, बट डिस्काउंट एक्सक्लूड के लिए कंडीशन सेटिस्फाई. यस सर. अब आपने तो बोला था देयर आर 4 नहीं 5 सबसेक्शन. सबसेक्शन 4 क्या है? सेक्शन 50 सबसेक्शन सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 ऑफ CGST एक्ट. क्या है ये? it is talking about where assessable value cannot be taken as transaction value. Okay. क्या हुआ? Am I properly audible? मेघना जी, am I properly audible? Where assessable value is not transaction value, where assessable value cannot be taken as transaction value, as supplier and recipient of supply are related, or price is not sole consideration, or for any other reason. Okay, or for any other reason. Okay, if assessable value cannot be taken as transaction value, then valuation shall be as prescribed. तो आप सब इंटेलिजेंट लोग अब बोलोगे मुझे एज प्रिस्क्राइब्ड मतलब कहाँ पे जाना पड़ेगा? टू चेक हाउ वैल्यूएशन विल बी डन, वेयर accessible value
cannot be taken as transaction value, so you will have to go to GST rules. आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? GST rules. And guys, let me tell you, this issue is discussed in rule number 27 to rule number 35. It is discussed in rule number 37 to rule number 35 of this CGST. Yes, sir. Wonderful, wonderful. तो अच्छे से आगे जाके ये rules भी समझ ले. As we go ahead, we will nicely understand this as well. अब आगे बढ़ते हैं. What is 15.5? What is 15.5? 15.5 is कुछ केसेस में गवर्नमेंट को बहुत इनसिक्योरिटी हो जाती है. उनको लगता है कि पता नहीं ये जो सप्लायर है वो सही से वैल्यूएशन करेगा कि नहीं, पता नहीं कि ये सप्लायर सही से वैल्यूएशन करेगा कि नहीं. तो गवर्नमेंट क्या बोलती है 15.5 में, इन नोटिफाइड केसेस, इन नोटिफाइड केसेस मतलब कुछ सिलेक्टेड केसेस में वैल्यूएशन शैल बी एज, कैसा होगा वैल्यूएशन? वैल्यूएशन शैल बी एज प्रिस्क्राइब. तो कुछ सिलेक्टेड केसेस में हम बोलेंगे वैसे ही होने वाला है वैल्यूएशन. इट क्लियर गाइस टू ऑल ऑफ यू? इन सम नोटिफाइड केसेस वैल्यूएशन will be as prescribed. ओके, एक खास बात क्या है पता है? ये सेक्शन है ना, ये स्टार्ट होता है with the words notwithstanding. Now notwithstanding means, what does notwithstanding mean? Notwithstanding means you will disregard, you will not consider here 15.1 or 15, yes, 4. So in short, this 15.5 has overriding effect, has overriding effect. Section 15 subsection 5 has overriding effect over section 15.1 and section 15.4. Is it clear to all of you? मतलब वैल्यूएशन अगर 51 या 54 से पॉसिबल है, बट नोटिफाई किया गया है फॉर पर्पस ऑफ 15.5, then valuation will be as prescribed. Did you get the point? That's what section 15 subsection 5 has overriding effect over section 1 and section 15 subsection 4. Did you all understand? क्या सबको वैल्यूएशन यहाँ तक सब आया है? Tell me guys, don't be shy, tell me, have you all understood valuation till this point? हमारे नोट्स बहुत ही डिटेल में है, विल गेट दोस नोट, बट बिफोर दैट यू टेल मी, हैव यू वैल्यूएशन? नाउ लेट्स गो अहेड. Yes, Ignite saying very good. यहाँ पे मैंने बेयर एक्ट के वर्डिंग्स भी दिए हुए हैं. ओके,
इलस्ट्रेशन देखेंगे. Shall we see illustrations? Yes, थोड़े illustrations देखते हैं. Yes. So let's go to 1-2 illustration. So what you will see in notes, your notebook, you can just say illustration, illustration of valuation, and you will say refer class note, and you will get this note. Worry about that. Okay, तो देखते हैं. Go to this question. See, Ashok Enterprises sells mineral water bottles with MRP 20 per bottle. However, customers availing discount of rupees 4 per bottle. Okay. In the month of October, Ashok Enterprises sold 2000 bottles. तो कैसे होगा वैल्यूएशन अब इस केस में? इस केस में वैल्यूएशन ऐसे होगा कि 2000 बॉटल्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट है 4 रुपए पर बॉटल, तो मल्टीप्लाइड बाय 60. तो accessible value will be 2000 into 16, 32,000. Calculate CGST on that at 9% and HGST on that at 9%. Is it clear to all of you? Yes, sir. आगे बढ़ो. Yes. Let's go ahead now. Let's go to next illustration. Best Cars Limited sells a car worth 5 lakh to Sundar Automobile. Best Cars Limited incurred packing charges of 6,000. Best Cars Limited provided discount at 1% on the car price as part of Diwali scheme. Best Cars Limited agreed to provide further discount of 0.5% if Sundar Automobiles makes payment by 31st of March via net banking. Now, 31st of month, sorry. Sundar Automobiles makes the payment by 31st of month using net banking. Find the net GST liability in hands of Best Cars Limited. Applicable rate of GST 18%. Okay. So yes, packing charges आपको add करने पड़ेंगे because it is incidental expense. Yes. तो 5,06,000 आ गया. Further क्या हुआ? Further 1% डिस्काउंट दिया है on the car price. वो दिया हुआ डिस्काउंट है, so it is discount which is already given. So please subtract that 5 lakh into 1%, that is 5,000. So 5 lakh 1,000 is the transaction value. Calculate now CGST and SGST. Okay, now see the note. Since discount was known at the time of supply and can be linked to the specific invoice, the discount can be reduced from the transaction value. Okay. But what about this? 0.5% discount. वो conditional है. इसलिए for that discount, means we are talking about the next discount, the Best Cars Limited will have to issue credit note for 2,500. That is 0.5% of 5 lakhs. Okay. And the same must be linked to the relevant tax. Okay. And it can be deducted only if it is known at the time of the supply. Okay, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी. अब और एक क्वेश्चन पूछा गया है. ड्यू टू सीवियर कैश क्रंच, बेस्ट कार्स लिमिटेड रिक्वेस्ट सुंदर ऑटोमोबाइल्स to make the payment within 2 days, promising discount of 2% on doing so. Sundar Automobiles make the payment within 2 days. ऐसे वाला डिस्काउंट अलाउ नहीं हो. ये हैपहैज़ार्ड डिस्काउंट है. ये डिस्काउंट एग्रीड नहीं था एट द टाइम ऑफ सप्लाई. ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है
that since the discount was not known at the time of supply, it couldn't be claimed as deduction from the transaction value for GST. Is it, guys, clear to all of you? ये डिस्काउंट, ये वाला डिस्काउंट माइनस, yes sir, is absolutely clear, isn't it? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों. 1-2 क्वेश्चंस shall we solve ourselves? हम खुद से सॉल्व करेंगे 1-2 क्वेश्चंस. यस सर, मैंने आपको एंड में एक क्वेश्चन बैंक दिया है. एज यू गो टू द एंड ऑफ द नोट यू विल गेट वन क्वेश्चन बैंक. ओके, इस क्वेश्चन बैंक में प्रोबेबल लेवल ऑफ क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, ऐसे क्वेश्चंस में दिए हुए हैं. ओके, so go to that question bank given to you at the end of the notes. ये देखो, 1-2 सवाल सॉल्व करेंगे. We'll solve 1 to 2 questions this. Okay, all of you with me? चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन. तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? यहाँ पे आप लिखोगे, ये तो आपने किया, डिस्कस किया हमने, बट अब हम सॉल्व भी करेंगे. सिर्फ डिस्कशन से फायदा नहीं होगा, सॉल्व भी करेंगे. ओके, तो आप लिखोगे कि क्वेश्चन बैंक मिक्स्ड बैग क्वेश्चन. मैंने आपको मिक्स्ड बैग क्वेश्चन, ठीक है. क्वेश्चन बैंक कहाँ पे मिलेगी? क्वेश्चन बैंक एट एंड ऑफ द बुक, एट एंड ऑफ बुक. उसमें से व्हाट वी आर डूइंग? वी आर डूइंग वैल्यूएशन का क्वेश्चन, वैल्यूएशन का क्वेश्चन. के बाद में आप पेज नंबर डाल देना. फर्स्ट देखो, पूछा क्या है, देखो. फ्रॉम द फॉलोइंग डिटरमाइन वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई as per provisions of section 15 of CGST Act. Contracted value of supply, contracted value of supply is 15 lakhs, which is including GST. Yes sir, but contracted value of supply includes the following. Okay, contracted value of supply includes the following. तो आपको अभी बोलना है ये जो आइटम्स है A, B एंड C, ये इंक्लूड होने चाहिए या एक्सक्लूड होने चाहिए while computing assessable value. You all have to apply what we have learnt and tell me whether this A, B and C should be included or excluded while computing assessable value. Cost of primary packing. Cost of primary packing, packing मतलब incidental expenses. Yes sir. Cost of protective packing जो भी है, it is also incidental expenses. Design and engineering charges जो भी है, it is also incidental expense. Agreed? तो ये तीनों क्या हो गए? तीनों हो गए incidental expenses. Yes sir, very good मेघना. तीनों होने चाहिए include. Wonderful. तीनों होने चाहिए include. Do you agree that contracted value of supply already includes all these three? मतलब 11 lakhs में ये तीनों already included है. Yes sir. तो आप कुछ नहीं करोगे. You will not do anything. Okay, other information. Commission paid to agent by recipient on instruction of supplier and freight and insurance charges paid by recipient on behalf of supplier. मतलब
these are the expenses incurred by recipient of supply on behalf of supplier. तो ये दोनों हो जाएंगे include, yes, दोनों हो जाएंगे include, but वो added नहीं है, so you will have to add them both. So in 11 lakhs, please add 5,000 and please add 75,000. 11 lakh में 5,000 and 75,000 add कीजिए and tell me what is answer. Is your answer 11 lakh 80,000? Is your answer, guys, 11 lakh 80,000? Yes, sir. It is 11 lakh 80,000. But 11 lakh 80,000 is including GST. Yes, sir. 11 lakh 80,000 is including GST. So, guys, can I say 11 lakh 80,000 is equal to 118? So, what is 18? Very good. 11 lakh 80,000 is 118. So, what is 18? So, guys and girls, that will be equal to 11 lakh 80,000 into 18 by 118, which is rupees 10 lakhs. Do you agree with me? Yes, sir. It is rupees 10 lakh. So 10 lakh is your assessable value. Is it absolutely clear to all of you? Yes. एक जो डाउट है वो आ सकता है, रिकॉर्डेड बैच स्टूडेंट्स को एक डाउट आ सकता है. ऐसे क्यों बोल रहा हूँ रिकॉर्डेड बैच स्टूडेंट्स को डाउट आ सकता है? क्योंकि जो अभी देख रहे हैं उन्होंने पूछा नहीं है, बट कोई और स्टूडेंट डाउट पूछ सकता है, क्योंकि जो पास्ट बैचेस हुए हैं उसमें ऐसा डाउट आया है. वो डाउट ऐसा है कि सर वाई 11 lakh 80,000 इज इक्वल टू 118, वाई नॉट 11 lakh इज इक्वल टू 118? बट ऐसा नहीं है. क्यों नहीं है दोस्तों? बिकॉज एसेसेबल वैल्यू का हिस्सा ये 5,000 और ये 75,000 भी हो जाएगा. This 5,000 and 75,000 will also be part of the assessable value. Yes, sir. So in short, overall हमारे टर्म्स कैसे है? हमारे टर्म्स है कि हम जो भी रिकवर कर रहे हैं दैट इज इंक्लूडिंग जीएसटी. यस सर. तो हम 5 और 75 या 80,000 भी रिकवर कर रहे हैं, तो दिस 80,000 इज ऑल्सो इंक्लूडिंग जीएसटी. तो गाइस, इसलिए मैच्योर्ड व्यू यहाँ पे क्या है कि नॉट 11 लाख इज इक्वल टू 118, but 11 lakh 80,000 is equal to 118. That is a matured, what you can say, point here. Did you get it, all of you? Yes or no? So kabhi kabhi you have to read between the lines. You have to read between the lines and understand the whole situation. Full situation की गंभीरता को समझ के आपको कुछ चीजें करनी चाहिए. Right? So at whichever point of time, guys, you're watching these lectures, okay, these lectures are 100% applicable for June 24 exams and are applicable for December 24 exams. So at whatever point of time you're watching these lectures, I hope you're understanding them. Number one. Number two, which 5-6 lectures are on the YouTube, okay, but after that, if you want to watch the lectures, you're always welcome to visit www.meplclasses.com. And on that website, yes, it's an aspirational website. On that website, you will find list of all, yes, all India rankers. जहाँ पे देखो लेटेस्ट टर्म का भी अपडेट किया है. We had Rashi Parekh from Maharashtra who got all India rank. Okay, so guys and girls, पता है क्या आपको? She got 73 marks in tax, and that too when it was not open book. She got 73 marks in tax. So you all also can, get amazing score, and you all also can be there on this website. Okay,
अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, हाउ टू गो अहेड एंड टेक दिस कोर्सेस. So you can go to courses, you have to go to CS professional, you will find list of courses here. Okay. All subjects you can see here. And tax के लिए specifically I'm telling you कि you can go ahead and take up this lectures of tax. आपको क्या select करना है? New syllabus CS professional group 2 elective paper 7.2 GST and corporate tax planning. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो that these two tabs are there. एक मोबाइल के लिए है, एक अपने लैपटॉप के लिए है. Yes. So you can go ahead in this. For example, I go in this. You will get details of duration, amendments के साथ कैसे डील करेंगे, लेक्चर्स कैसे डिलीवर होगी, वीडियो क्वालिटी एंड वीडियो वैलिडिटी एंड पेमेंट ऑप्शंस, ये सब आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. राइट गाइस, शैल वी गो अहेड? यस. So, and of course we have 100% डाउट सॉल्विंग बैकअप. मतलब जब भी आपको कोई डाउट आता है लेक्चर्स देखते वक्त, so you have to just connect with the contact numbers given and that query gets resolved in the span of 24 hours. तो आपको उसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है. चलो अब विदाउट एनी डिले लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो कैसे सॉल्व करना है. So now the heading that you will give is computation of assessable value. Computation of assessable value, that is transaction value, that is transaction value as per section 15 of okay, just give me a moment guys. Okay guys, I'm back, I'm back. तो आपको क्या करना है, computation of assessable value, that is transaction value as per section 15 of CGST Act 2017. Okay, particulars and amount in terms of rupees. Okay guys, तो बेसिकली ना ये सबसे स्कोरिंग पार्ट होगा आपके एग्जाम में. सम्स जो है ना आपका सबसे स्कोरिंग पार्ट होगा एग्जाम में. तो दिस इज द प्लेस वेयर टैक्स इज अ बेटर इलेक्टिव देन अदर्स. बाकी सब्जेक्ट्स के अगेंस्ट नहीं हूं मैं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कंपैरिजन वेयर टैक्स कैन गिव यू मार्क्स एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट. तो ए पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू. व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ गुड्स? तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ गुड्स is your 11 lakh rupee. Yes sir, 11 lakh rupee. B point, add. B point, add. Add क्या होगा? कमीशन. ये ऐड होगा, ये देखो कमीशन एंड फेट एंड इंश्योर. कमीशन paid by, right, full form, recipient of supply on behalf of supplier. वो एक पॉइंट है. और दूसरा पॉइंट क्या है? फेट एंड इंश्योरेंस.
VAT and insurance paid by recipient of supply on behalf of supply. Okay, so amounts will be 5,000 and 75,000. Amounts will be 5,000 and 75,000. So basically 11 lakh 80,000. So 11 lakh 80,000 will be your, therefore, what? Transaction value. बट कैसे ट्रांजैक्शन वैल्यू? इंक्लूडिंग जीएसटी. मैं आपको हर कैटेगरी का एक एक सम सॉल्व करके, अब से सॉल्व करके लेने वाला हूँ एक एक सम. उसके बाद तो क्या, वी कैन जस्ट कीप ऑन डिस्कसिंग द सम्स. आई विल गिव यू रेडीमेड सॉल्यूशन. तो ट्रांजैक्शन वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी इज 11 lakh 80,000 less GST at the rate of 18%. So you know what to do. 11 lakh 80,000 into 18 by 118. तो आपको पता है क्या आंसर होने वाला है? क्या? 1,80,000. So guys and girls, ladies and gentlemen, the final answer will be, therefore, assessable value 10 lakhs. मुझे हमेशा लगता है कि क्लासेस होने चाहिए मज़ेदार और असरदार. असरदार part is more important. They should be impactful. The classes should be impactful. You should be able to score in exams. You should be able to apply the knowledge in the practical. Okay, and that's how you should select the classes. Chalo guys, so 10 lakh rupees is your assessable. मजेदार भी, असरदार भी. 10 lakh rupees is your assessable value. Notes. Notes क्या आएंगे? Notes. Notes will be, number 1, as per section 15. नोट ऐसे आएंगी, as per section 15 subsection 1 of CGST Act 2017, transaction value shall be assessable value. Transaction value shall be assessable value. That is price actually paid or payable. That is price actually paid or payable for supply of goods or services, for supply of goods or services, or both. Okay. It is assumed that supplier and, you write full form, recipient of supply are not related, and price is sole consideration for the supply. Price is sole consideration for supply. Did you understand, all of you? First note? Yes sir. First note समझ में आ गई. Second note. Second note will be what? Second note will be, as per section 15 subsection 2, मतलब inclusion clause B of the GST Act, transaction value shall include any expenses
shall include any expenses incurred by recipient of supply, incurred by recipient of supply on behalf of supplier, on behalf of supplier. So as per section 15 subsection 2 clause B of CGST Act, transaction value shall include any expenses incurred by recipient of supply on behalf of supplier, and therefore कमीशन, वो एक कमीशन है वहां पे, और क्या है, एंड therefore कमीशन एंड VAT and insurance paid by recipient of supply, and therefore commission and VAT and insurance paid by recipient of supply shall be paid by recipient of supply on behalf of supplier. Shall be included. Is it clear to all of you? Is it, guys and girls, clear to all of you? Yes sir. अब देखो third point. Now see third point. Okay. थर्ड पॉइंट क्या है सर? जो हमने प्राइमरी पैकिंग, प्रोटेक्टिव पैकिंग, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग चार्जेस, ये तीन चीजें हमने निग्लेक्ट की ना, तो वो क्यों निग्लेक्ट की, उसके लिए आपका थर्ड नोट है. तो थर्ड नोट इज एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी ऑफ CGST एक्ट, ट्रांजैक्शन वैल्यू, प्लीज राइट फुल फॉर्म, जिनको पास होना है फुल फॉर्म लिखो. ट्रांजैक्शन वैल्यू shall include any expenses which are incidental to supply, any expenses which are incidental to supply as per section 15 subsection 2 clause C of CGST Act. Okay, transaction value shall include any expenses which are incidental to supply. Therefore yeah, primary packing, protective packing, therefore primary packing, protective packing, as well as design and engineering charges as well as design and engineering charges shall be included, shall be included. Okay, since full stop continue, since they are already forming part of, since they are already forming part of rupees 11 lakh, no further adjustment. सर कितना लिखवाते हो? अरे भाई लिखना ही पड़ेगा ना, तो एग्जाम प्रिपेयर आपको करना है. ओके, आई वांट टू मेक यू एग्जाम प्रिपेयर्ड.
That's why you have to go through this drill. आपको इस प्रक्रिया से, इस प्रोसेस से गुजरना ही होगा. When process is bit tough, the result will be in your favor. Okay, ये याद रखो. तो होने दो, थोड़ा प्रोसेस को टफ होने दो, कुछ नहीं होता. ऐसा सब फ्लावरी फ्लावरी नहीं, क्या ऐसा नहीं होने वाला है. थोड़ा आपको मेहनत करना ही पड़ेगा. सब मेहनत क्या मैं ही करूँ? ओके, गॉट इट. एंड गाइस, एक और नोट आनी चाहिए. व्हाट इज दैट नोट अबाउट? व्हाट इज दैट नोट अबाउट? दैट नोट इज अबाउट excluding GST. So that is your fourth note now. So please write fourth note. As per section 15, subsection 2, clause A of CGST Act, transaction value shall include any taxes, other than GST. Got it? Therefore, GST amount, is specifically deducted as it forms part of rupees 11 lakh 80,000. So we can say therefore GST amount is specifically deducted while computing assessable value. Here, is it clear to all of you? So I hope, guys and girls, you have understood today's session. You have liked today's session. So please do comment in the comment box. And if any doubt, please feel free to ask your doubts. So now I will meet you in the next class. In that class, we will continue further with topic of valuation. Till then, that's it from my end. Thank you so much for being wonderful audience. Bye bye. Take care. And don't forget to subscribe to our channel MEPL, and hit the bell icon so that you never miss out on any important notification. Bye guys. Take care.